function argument. So yesterday we just discussed about how to create a user defined function. Now we go for the function argument. Based upon the function argument or parameter, we pass the function argument in two way. मैंने हमें दीटा वे रे function argument टा pass करियो. गोटे होची call by value आ गोटे होची call by reference. So if a function is to use the argument, it must declare the variable that accept the value of the argument. This variable called as a formal parameter. तो एर्लियर माने प्रीवियस क्लास रे आमे जो फंक्शन टा डिफाइन कले आ पैरामीटर जो पास करथले सेटा होची व्हाट इट इज अ सिंपल आर्गुमेंट दैट वी आर पासिंग formal parameter behave like the other local variable inside a function and are created upon the entry into which function and destroyed upon exit माने फंक्शन टा जेतरा हमें कॉल करिवा फंक्शन टा कॉल हला वैल्यू पास कले तापर फंक्शन टा हमर एग्जिट हे गला. While calling a function, there are two ways in which argument can pass to a function. One is call by value, another is call by reference. Call by value, this method copy the actual value of an argument into the formal parameter of function. In this case, changes made to the parameter inside the function have no effect on the argument. माने मु जेतेबेले बुझ पारे जिनसटा जेतेबेले मु फंक्शन टा कॉल करूची गोटे वैल्यू पास करूची जेतेबेले मु वैल्यू पास करूची फंक्शन को से वैल्यू टा कोन होची फंक्शन पैरामीटर रे इनिशियलाइजेशन होची बुझी पाछो जा कहूची ना बुझी पारनो किछि देखो एटा होची मु आउटे तुम देखै दे देखै देले बुझी पारियो आमे फंक्शन टा केमते डिफाइन करूचे एटी काली आमे एटा करथिले has include stdio.h. This are you install this software? सर नो सर सर मु डाउनलोड करथली नेटवर्क प्रॉब्लम देखेला तो मु करनी पे ट्राई करिवो जदि न हैला मते कहिवो. यस सर. Then here I define void display function. If I pass here passing suppose x int x and here I calling a function. I calling a display function. When I calling a display function, then I pass the parameter मुझे 20 pass करेगी. 20 टा एठी इनिशियलाइजेशन हला वैल्यू शो कला. Just 1 minute.
देख एठी मु जो वैल्यूटा पास कली माने फंक्शनटा डिस्प्ले फंक्शनटा को कॉल कली एठी रहला 20 ए 20 टा मु स्टोर कली x रे एदर मु x रे स्टोर करछि मते देखिला वैल्यू इज 20 अच्छा मु एठी x पे वैल्यू स्टोर करले किंतु मु एठी कोन कली सपोज मु x वैल्यूटा एठी चेंज कर देबी यदि मु एठी किछि चेंज करि दउछि ताले मोर एठी कोन देखैबो मते एठी अफेक्टेड करिवो कि नै प्रोग्रामटा यदि मु मेथड भितर जदि किछि चेंज करूछि एटा मोर बाहर किछि अफेक्टेड करिवोनी माने मते एक्चुअली देखैबा कथा केते ये ऑटोमेटिक एठी किछि चेंजेस हेलानी देखैबोनी एटा मते 30 रीइनिशियलाइजेशन हे जो प्रोग्रामटा देखो मु पास करूछि केते 20 20 टा आसी गला एठी स्टोर हैला किंतु आ भितरे मु वैल्यूटा को चेंज कर देली तो एठी रहला कोन ए जो प्रोग्रामटा मते कहूछि जदि मु कॉल बाय वैल्यू कहबी दिस मेथड कॉपी द एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम द आर्गुमेंट रे मु जो 20 पास कली से एक्चुअल वैल्यूटा कॉपी कला इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन इन दिस केस चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन हैव नो इफेक्ट इन द आर्गुमेंट फंक्शन भीतर जदि मु किछि चेंजेस भी करूची पैरामीटर रे किछि इफेक्ट करू नै से ऑटोमेटिक चेंजेस हे होची एटा बिकॉज ऑफ कॉल बाय वैल्यू रहउची एबे मु कॉल बाय रेफरेंस केमती करिवि दिस मेथड कॉपी द जेमती कहउची मु कोन मु धर कहि परिबा ग्राइंडर मशीन ने आंबो पसौची मैंगो एंड आई एक्सपेक्ट दैट मैंगो जूस विल कम बट भितरे मु चेंज करके ताको मु चेंज कर देली जैक फ्रूट बोली किंतु मु एक्सपेक्ट करूची कोन मते मैंगो जूस आसीबो किंतु आसीला मते जैक फ्रूट मते मते किछि डिस्प्ले करलानी तो मु केमिति बाहर को केम जानिबी तो एई जो चेंजेस टा को हमें आनिया पई हेले हमें कॉल बाय रेफरेंस यूज करिवा दिस मेथड कॉपी द एड्रेस ऑफ द आर्गुमेंट एड्रेस टा कॉपी कर देले तो जहां भी मु चेंजेस करबी इनसाइड रे मते सेटा बाहर रिफ्लेक्ट करिवो हम भीतर जहां वैल्यू चेंज कर मो पाकर एड्रेस अछि त मु जान देबी वैल्यूटा तो इनटू द फॉर्मल पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन द एड्रेस इज यूज्ड टू एक्सेस द एक्चुअल आर्गुमेंट यूज्ड इन द कॉल दिस मींस दैट द चेंजेस मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द आर्गुमेंट हमें जो चेंजेस करिवा सेटा आर्गुमेंट रे हमें अफेक्ट करिवो दैट इज ए कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटे कॉल बाय वैल्यू रे जाउचे केमती हबो not a small program আজি सौम्य कोडे से तो कॉल भी करथले लेकिन उठेले कॉल खाली से मोटी लेट हेले से मते कॉल करथले मोटे कॉल से उठेले मुझे प्रॉब्लम अछि कोन जाय तो देला void swap function int x and y एटी मो x and y पास करली एज अ पैरामीटर तबे मु वैल्यू पास करली मु रन करी देखि दो छी प्रोग्राम टा को होची आफ्टर स्वापिंग माने स्वापिंग माने कोन कहले पोजीशन टा चेंज करिवि int a वैल्यू बिफोर स्वापिंग रे a रो वैल्यू 100 अछि b रो वैल्यू 200 अछि तब मु कोन करिवि आफ्टर स्वापिंग माने जेतले मु चेंजेस करिवि पोजीशन टा मोर वैल्यू टा कोन रहइबो किंतु सेठी भी मते सेम वैल्यू देखैबो 100 एंड 200 स्वापिंग कला परे भी मते सेम वैल्यू टा शो करछि दैट मींस व्हाट मोर किछि चेंजेस हैला नेति स्वापिंग कला परे भी तो सेति पय हमें कोन करिवा देखो ए प्रोग्राम टा केनति रहउछि मेथि int a equals to 100 b equals to 200 तो बिफोर स्वापिंग देखेला कोन 100 एंड 200 तो एबे मु जो स्वैप फंक्शन टा अछि फंक्शन टा को कॉल कली a जगह रे 100 अछि b जगह रे 200 अछि ए दीटा वैल्यू मु पास कली एक जगह रे 100 पास हला
y जगह 200 पास है ओके तो int temp रे मोर कौन x वैल्यू स्टोर है x वैल्यू स्टोर है x रा वैल्यू एठी केते हला x रा वैल्यू केते अछि 100 अछि दिशा बुझी होची तो yes sir टेम्पररी रे मोर केते स्टोर हला 100 स्टोर हला y रे केते स्टोर अछि y रा वैल्यू केते अछि Yeah. हम Actually, 100 to the a and b माने 100 and 200 पास करली A and B. तो 100 200 माने a रे केते स्टोर हला 100. 100 y रे केते स्टोर हबो दिशा 200. 200 तो एठी x इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एठी हला 200 माने x से केते स्टोर हे गला 200 हे गला y रे एबे टेम्पररी स्टोर Temp टेम्पररी वैल्यू केते अछि 100 अछि तो मोटे 100 रे स्टोर Y कर है 100. माने 100. मोर कोन हबा Yes कथा sir. Yes sir. Yes. x टा 200 y टा हला 100 एटा मते रिटर्न करियो Y टा 100. जेतले रिटर्न करछि फंक्शन टा जेतले फंक्शन टा मु कॉल करबी से रिटर्न कला पर भी से चेंज होबनी आगे सेम वैल्यू मते देखेला बुझी होछि before swap. बिकॉज़ Before. ऑफ मु Yes. जहां भी चेंजेस करूछि तेरा रिफ्लेक्ट हो नै फंक्शन And में स्टोर होछि किंतु भितर reflect जहां हो जहां नहीं. चेंजेस करिवि तेरा मोर रिफ्लेक्ट हैला भीतर जहाँ तो एठी होछि मोर कोन कॉल बाय वैल्यू तबे कॉल बाय Yes. रेफरेंस केमति होबो मु जीबी सर सौम्य ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ସାର୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ତା ମାମୁର ସାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଅଛି ओहो हो ଅଙ୍କଲଙ୍କର ସାର୍ ଏବେ କ'ଣ ରିସେଣ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ସାର୍ ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଦଉଛି ତ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ओके सो नाउ मु एबे कोन करबी ना मु कॉल बाय रेफरेंस रे जीबी एबे प्रोग्राम टा मुझे चेंज करिए ओके एबे देखो एबे सेम प्रोग्राम एठी मो एड्रेस टा पास कर जेठी मो वैल्यू पास करूनी a रा वैल्यू हला 100 b रा वैल्यू हला 200 ओके कॉलिंग ए फंक्शन टू स्वैप ए वैल्यू ampersand a indicate pointer it contain the address of a variable ampersand b is call as it taken the address of the variable b एटा एड्रेस टा मु पास कली वैल्यू टा अछि ता एड्रेस टा गला एड्रेस टा आसी के स्टोर हला कोठी x एंड y रे स्टोर हला int टेम्पररी रहला टेम्पररी कोन हबो ना x रो एड्रेस टा टेम्पररी स्टोर हला y रो एड्रेस टा x रे स्टोर हला नाउ टेम्पररी एड्रेस टा जाकी y रे स्टोर हला होला तमे वैल्यू जहां भी चेंजेस करो एड्रेस टा मु रखिल ना तो जहां भी वैल्यू मु चेंजेस करबी जेटा मते रिटर्न करियो यदि मु रन करूची एटा होची कॉल बाय रेफरेंस देखो चेंजेस हला ए रा वैल्यू 200 हला b रा वैल्यू 100 हला फर्स्ट एड 100 स्वैपिंग हला पर b रा वैल्यू 200 हला एटा 100 हला हला दिशा बुझी हला yes sir so that एठी हमें जोटा कॉल करूचे ampersand a ampersand b it contain the address of a variable
ओके माने ए आउ बी रो से एड्रेस रखिदेला तेणु ए आउ बी जहाँ भी चेंजेस हुअंतु भितर जहाँ भी आम कंटेंट चेंज करवा तो किसी प्रॉब्लम नहीं ए आउ बी भितर आम जहाँ भी चेंजेस करवा किसी प्रॉब्लम नहीं कारण तांकर एड्रेसटा मो पाखे अच्छी से जुआड़े जातु तेणु तांकर भैल्यूटा मो पाखे रहा ए एंड बी रे एड्रेस स्टोर है तो ये एड्रेसटा केमती स्टोर हम ना ये पॉइंटर यूज कराला आम पढ़ा पॉइंटर एड्रेसटा स्टोर करने लिखले स्टार एक्स एंड स्टार वाई व्हिच इज कंटेन द एड्रेस ऑफ ए एंड बी तब टेम्परारी गोटे वेरिएबल स्टोर है टेम्परारी वेरिएबल कौन है एक्स एड्रेस स्टोर एक्स एड्रेस वाई एड्रेसटा स्टोर है एंड वाई रे टेम्परेरीटा स्टोर है टेम्परेरी वैल्यूटा स्टोर है तो रिटर्न कर आम जहाँ भी चेंजेस करवा से हमको रिफ्लेक्ट कला व्हाट इज द एक्चुअल चेंजेस बुझेला सूर्यकांत बुझेला Yes, sir. that is Yes. call by Yes, value. sir. It is a call by value and call by reference. It is the most important part of your programming for changing the value, call by value and call by reference. Okay. Difference. A scope is any programming in a region of the program where define a variable can have existence and beyond the variable it cannot be accessed. There are three places where variable can be declared in the C programming language. Okay, so what are the positions are there? Means you can define a variable in a three position. आमे जो variable टा define करूचे से variable टा में तीनटा position ने define करी परिबा. गोटा होची inside a function or a block which is called as the local variable, outside of all function which is called as the global variable. In the definition of a function parameter which is called as the formal parameter, so we call as it is formal parameter. The scope in any program is a region of the program where define a variable can have its existence and beyond that variable it cannot be accessed. And आमे जोटी variable टा define करिवा आमे सेही जगह रे variable टा को access करि परिवा. After that आमे अलगा जगह रे value टा को access करि परिवा नहीं. So there are three places where we define a variable and it can be declared in the C programming language. One is you define a variable टा में कोड define करि परिबा ना function भितर define करि परिबा जो variable टा में function भितर define करूचे ताको कहजिवो local variable because that scope is only limited within that function. And another is called as the your formal parameter. So another is called as the formal parameter. So where you define the value as a parameter through में जो value टा pass करिवा. Okay, so से parameter रो value टा आसी कि हमारा store होची. Okay, मैं अभी check करिवा एठी. So based upon that, your variable is of following type. One is your local variable that are declared inside a function or block are called as the local variable.
they can be used only by the statement and inside the function. Okay, so it is defined inside a function. Local variable are not known to a function outside of their own. Local variable टा हमें जोटा define करिवा सेटा हमें outside of the function ताको access करि परिवा नहीं. The following examples show how the local variable are used, and here all the variable like a and b, c are called as the local variable in the main function. And हमें main method भीतर जहाँ भी variable टा define करिवा, suppose ये देखिवा हमें int main a, b and c, it is called as a local variable because its scope is limited within that function. ये function बाहर जदि हमें से variable टा को access करिवा को चाहूचे, so we cannot access it. Okay, because that value is only limited within that particular program. So for printing that value, we're using int a equals to 10, b is equals to 20, c is equals to a plus b, so it is giving you result. And global variable are defined outside of the function. Those are the variable is defined outside of the function is called as the global variable on the top of the program. Global variable hold their value throughout the lifetime of your program, and they can be accessed inside any function defined for the program. A global variable can be accessed by any function. That is, global variable is available for use throughout the entire program after its declaration. And आमे जो variable टा define करिवा, so that variable is accessed anywhere. मैं जोटी चाहिए सेठी यूज करि परिबा, किंतु लोकल वेरिएबल टा केवल हमर फंक्शन भीतर ही हमर यूज करि हबो, ता स्कोप टा केवल फंक्शन भीतर ही लिमिटेड रहिबो. And so for that reason we have to define a concept, so that is called as your global variable through which you can access the program or access the variable value anywhere. माने मु जोटी चाहिबी सेठी ताको एक्सेस करि परिबे. देखो ये ग्लोबल वेरिएबल टा केमते डिफाइन कराई छी, stdio.h पर ये डिफाइन कराई छी intg. Okay, so intg is called as your global variable. It is defined outside of the function. एटा function बाहर डिफाइन करा जाय छै. And local variable एठी रहउची int a and b. ये जो ग्लोबल वेरिएबल टा मु डिफाइन करछि g, एटा इनसाइड द फंक्शन रे भी सेटा यूज करि हबो. g equals to a plus b. So it is the actual work of your word. You can say it is a actual work of your global variable. Okay, so int g, int a and b. So a is equals to 10, b is equals to 20, then g is equals to a plus b, so which is giving you the result of the value. Clear? These are Yes, sir. Yes, sir. okay. And these are the variables that we're using, like local variable and global variable. As you know that local variable रो scope टा हमर limited रहिला function भितरे, जेमते कि हमें गोटे function हो int main method हो Global बा जदि display function हो, हमें जदि किसी user defined function हमें define करूचे, so that scope is only limited within that program. But हमर जो variable टा रहिला global variable जोटा रहिला सेटा हमें global variable. सब जगह एक्सेस करि परिबो. सेटा कोनोसी मेथड भीतर डिफाइन करा हबोनी, सेटा आउट ऑफ द स्कोप रे एटा डिफाइन करा हबो. बुझिला? Yes, So sir. it is all about Yes, sir. local and global variable. And now see there are formal parameter. Formal parameter are treated as a local variable within a function, and they take the precedence over the global variable. Like we are defining int a is equals to 20, then a is equals to 10, b is equals to 20. Okay, so एठी रहला हमर मेन मेथड रहला, एठी गोटे ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कले 20, एठी देखो लोकल वेरिएबल हला 10. देन एठी मोर रिजल्ट कोन आसीबो, एटा जेतल मु करिवि एठी मु सम फंक्शन को कॉल करूची. सम फंक्शन ए एंड बी पास कली, ताले मोर को वैल्यूटा जीवो
এই ভ্যালুটা গলা 10 and 20 গলা তো 10 and 20 টা এটিকে আসিলা তারপরে 10 and 20 রে কଣ হবো না এই যে ফাংশনটা সম ফাংশন আছে সে রিটর্ন করিব কোন a plus b আড করিকি মতে ভ্যালু রিটর্ন করিব বুঝিলা কিন্তু এটা কো ভ্যালুটা রিটর্ন করিব লোকাল ভেরিয়েবলটা রিটর্ন করিব ଆମେ ଭିତରେ ହିଁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ବୁଝିହେଲା Yes, sir. I'll show that practical in the next class okay our next class रे এটা parameter টা দেখিব তারপরে পয়েন্টার টা আমি আরম্ভ করিব okay on the maybe in the next week your course will going to over okay so after that we go for the exam okay online exam clear Yes, sir. so Yes, sir. you prepare it and যদি কিছু ডাউট ফাউট ଅଛି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ବାହାର କର ମୋତେ ପଚାର so I will clear your doubt then ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମକୁ ଯିବା ଓକେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ହବ ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ବିଲ୍ଡିଂର ହବ ତାପରେ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂର ହବ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ହବ ଓକେ ଓକେ ଚलो ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে এটা ଦେଖିବା ଓକେ Yes, sir.